Hello and welcome to Field Visions episode 13, where we have a very special guest. Today we have India's rugby captain Shikha Yadav. She's coming into this interview after a very successful Asian Championship uh, campaign. So we will go through her journey. We'll ask her everything we need to know about her journey and rugby in India in general. So Shikha ma'am, welcome to Field Vision's first ever exclusive interview. This will be our first ever interview where we'll interview a actual athlete. So it's a special Yeah, occasion for us, and we are happy to welcome you. So ma'am, welcome to the show. So how are you, ma'am? I'm good and thank you for having me. Thank you so much. Yeah, fantastic. So मैम of course rugby is a sport in India जो ज़्यादा लोग follow नहीं करते अभी भी. Like we are starting to understand how rugby works. Rugby India is doing a lot of work. So ma'am, how was your entire journey? Like, how did you pick up rugby of all sports? Like what was the initiation of your journey with rugby? So I had introduced myself to rugby in 2016. Before that, I was an athlete, basically a national javelin thrower. And before that, I did so many sports like 400 meter, handball, throw ball, volleyball, even shot put, discus. There are a lot of game I have played, and I also represented state level to all these games. और रग्बी मेरा 2016 में स्टार्ट हुआ बिकॉज रग्बी के लिए आपको यू नीड स्ट्रेंथ स्टेमिना स्किल्स लॉट ऑफ स्पीड एज वेल तो जो बेस था वो एक्चुअली मेरा काफ़ी ज़्यादा क्लियर था बिकॉज ऑफ द गेम्स आई हैड प्लेड और रग्बी इसीलिए चूज़ किया बिकॉज मैंने कबड्डी भी खेली है सो रग्बी इज़ लॉट ऑफ अबाउट टैकल्स एज वेल तो उसके बाद 400 मीटर जिससे स्पीड मिलता है एंड थ्रोइंग उससे स्ट्रेंथ मिलती है सो रग्बी एक कंप्लीट गेम था जो मेरे लिए बना था इसीलिए मैंने उसको परस्यू किया So as you're saying, strength is very important for rugby. So do you think rugby is one of the most strength intensive sports? Like Baki strength intensive sports may be a football, which requires a lot of stamina. But football is not very physical. It's physical, but it's not very physical. So where do you place rugby in terms of strength based sports? Like, is it the most strength based sport you have played? you can consider rugby as a strength sport but you actually have to apply your all skills speed stamina as well and of course rugby is a contact sport so you need strength as well but I can't say key strength is everything for rugby you must have those skills like speed and stamina and quick reactions there are a lot of skills as well. Right, right, right. Ma'am, you are from Delhi, right? And Delhi has great sporting culture. They do pretty decent in national games of all the sports, and they have good infrastructure compared to other cities. But specifically about rugby, like what is the status of rugby in Delhi itself? Like, do players play rugby a lot? Is there a rugby culture? So, what do you think about Delhi as a city for rugby? So like Delhi has four clubs like a lot of people are actually getting involved into rugby through our clubs and maybe Delhi में इतना अभी नहीं है rugby culture but still around my surrounding where I live people actually knows what is exactly rugby but I don't think so like you can't say कि Delhi is a rugby rugby sport place दैट्स नॉट आई थिंक बिकॉज वो कल्चर अभी आया नहीं है क्योंकि इतना पब्लिसिटी इस गेम को नहीं मिला दिल्ली में या फिर ऑल ओवर इंडिया में बट स्टिल पीपल आर कमिंग पीपल आर एक्चुअली ज्वाइनिंग रग्बी मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है ना प्रोग्रेशन हो रहा है गेम का Abhi to recently we had the Rugby World Cup and like India mein I saw many fans discussing rugby online like I think South Africa won the World Cup. I'm not sure. या 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 Yeah, या yeah. So do you think World Rugby का जो impact है that is impacting Indian fans as well because थोड़े साल पहले I did not like even Rugby World Cups are being shown on Indian TV. ठीक है. यस यस So, do you think the madness around World Rugby is also growing in India? ऑफ कोर्स इवन मैंने कल ही इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी वहां पे एक कोई इन्फ्लुएंसर था तो वो सबके वर्कआउट फॉलो करते थे
तो वहां पे उन्होंने एक रग्बी प्लेयर का वर्कआउट उठाया था और उन्होंने वो वर्कआउट किया। तो इट मीन्स एक्चुअली रग्बी ग्रो कर रहा है। लाइक अगर आप बात करो कि वर्ल्ड रग्बी से वो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो इट्स नॉट इवन कि वो मैच ही देख रहे हैं, वो इवन इंस्टाग्राम पे भी हमारे इंडियन पीपल्स को मतलब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है ये चीज। Fantastic, fantastic. Talking about World Rugby, I like since you are a rugby player, you are the best person. I mean, rugby, there are many formats. We have rugby sevens, we have rugby union, we have rugby league. Probably, I'm not very sure. So, can you educate us about the all the rugby formats, because it's a very big confusion when a new fan wants to support rugby, they don't understand what format is the actual format to play or follow. So, just educate us about all the Yeah. formats. So they are basically professionally, there is a sevens format and 15s format. There are also 10 aside, but it actually plays around the clubs only, not on a professional level. And sevens is all about speed, strength, and stamina. And mainly 15s, जिसमें 15s प्लेयर एक फील्ड पे खेलते हैं, उसमें स्ट्रेंथ का और जो स्पीड का है वो जो पैक होता है वो अलग होता है। 8 प्लेयर्स जो होते हैं वो स्ट्रेंथ बेस्ड पे का सिलेक्ट किए जाते हैं, और बाकी जो 7 होते हैं वो स्पीड एंड स्किल्स पे स्किल बेस्ड पे वो सिलेक्ट किए जाते हैं। और सेवन्स में जो सातों प्लेयर जो फील्ड पे उस टाइम पे खेल रहे होते हैं वो एक लेवल पे होते हैं, सब स्पीड वाले होते हैं, सब स्ट्रेंथ वाले होते हैं, सब पे स्किल्स होती है। तो सेवन्स इज लाइक आवर क्रिकेट 20 T20 फॉर्मेट। T20. Yeah, या और टेस्ट मैच आप कह सकते हैं कि रग्बी 15 जिसमें 15 प्लेयर खेलते हैं और 8 रिजर्व्स रहते हैं, तो वो आप टेस्ट क्रिकेट कह सकते हैं। और 15 का जो वन हाफ होता है, ईच हाफ इज अबाउट 40 मिनट्स एंड 10 मिनट्स का रेस्ट होता है, अगेन 40 मिनट्स। एंड सेवन्स का होता है 7 मिनट्स हाफ, टू 2 मिनट रेस्ट, एंड देन अगेन 7 मिनट हाफ। great, great, great. So what is your favorite format to play? When I started playing rugby, 15s was my favorite format to play for. But right now, I'm actually falling in love, gradually falling in love with sevens, Because more faster. more faster. Fantastic, fantastic. So let's talk about the your national team experience as well. Like Rugby India brought Vasil Saravi, the big star, big Hall of Famer guy. Everybody knows him. Like whoever follows rugby, they know him. So what has been your experience working under such a great mentor of the game in the last few months? So it was a like I can't have words. The experience, even not me, my whole team and coaching staff, they can actually feel his energy, the positivity he brings to the team, the way he actually teaches us, the way he carries himself with a lot of positive vibes around him. Like अगर वो फील्ड पे हैं और उनके पास जो भी नॉन रग्बी प्लेयर्स हैं या कोचिंग स्टाफ है, वो रग्बी खेल रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, वो हंस रहे होंगे, तो जो एनर्जी जो वो लाते हैं फील्ड में, वो आप बस उनके साथ रहोगे तभी आप फील कर सकते हो। और इवन जब मैं बता रही हूँ तो उनकी बात से मेरे फेस पे इतनी हंसी आ रही है और वो एनर्जी आ रही है Yeah, I बहुत। can see that. उन्हें जो वो मैजिशियन है ऑन द फील्ड भी और ऑफ द फील्ड भी। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा। Fantastic, fantastic. Like I can see that you are you are completely in awe. So like, but like before we had Vassal, we had Ludwig as a coach. So tactically speaking, how are they different? सो हर एक कोच का अलग अलग तरीका होता है सिखाने का। सो ऋत्विक सर का भी काफी अच्छा था, आई कांट से कि वो अच्छा नहीं था। और सिरेवी सर का और ऋत्विक सर में ये डिफरेंस है कि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग कराते हैं, और सिरेवी सर स्टिक टू द बेसिक्स। जो भी बेसिक्स हैं आप उस पर ही फोकस करोगे। और सिरेवी सर का ये मेन होता है कि वन स्टेप एट अ टाइम, you can't focus on the whole tournament, just take 7 minutes, go give your best and come out। और लुत्विक सर का मेनली होता है कि पूरे 14 मिनट्स देखना है, कैसे क्या खेलना है। उनका थोड़ा कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग रहता है, बट श्रीदेवी सर का वॉज स्वीट एंड सिंपल। Understood. So you returned from a very successful Asian Championship campaign where we became second.
So how was the entire experience like? Because that tournament was followed काफी अच्छे से in social media. Even Field Vision covered the event. So how was your entire experience in the Asian Championships? So it was a the tournament was only for the 2 days, and it went quite well for all of us because of our coaching staff. We were actually following the pattern which our coach instructed us, and the experience is like wholesome. We actually felt that up and down, and even after feeling that lost in semifinals, but again we actually got so many positive points from that match. We actually did our pattern really well. We executed the things which our coach told us, and it is a very fantastic tournament for all of us. Fantastic, fantastic. So, ma'am, Rugby India as an organization has been investing a lot of money in marketing, in hosting events, hosting national championships. अभी तो KIIT के साथ I think they have a MOU as well. So, you started rugby in 2016, as you said. अभी 2024 चल रहा है. So, what is the difference in professionalism, investment, marketing, finances, national tournaments? What is the difference you have seen? Like improvement है या फिर same चल रहा है फिर like what is the entire like journey for Rugby India in front of your eyes? रग्बी इंडिया जब 2018 या 2016 में मैंने रग्बी खेलना स्टार्ट किया, एंड 2019 में आई वाज सिलेक्टेड फॉर इंडियन नेशनल रग्बी टीम. जो 2019 में जो हमारा लेवल था इन like if you talk about our performance, if you talk about our diet, the nutrition, the psychologist, there was no nutritionist for all of us in 2019. There was no psychologist at that time, and right now we have nutrition, we have nutritionist, we have psychologist, we even have physiotherapist which actually जो पूरे टाइम तक हमारे साथ रहते हैं थ्रू आउट द डे वन टू डे लाइक at the end of the tournament till to the tournament. और काफी इवन सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखोगे कि 2019 में इतना अपडेट नहीं मिलता था रग्बी इंडिया की तरफ से या एशिया Yes, रग्बी yes. की तरफ से. बट इस अगर आप ये देखो 5-6 साल में जो एकदम से रग्बी इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है वो काफी अच्छा हुआ है. लाइक हर एक चीज में इवन 2019 में हमारे जो प्लेयर्स थे वो बेसिकली उड़ीसा, महाराष्ट्र और बंगाल एंड दिल्ली से आते थे. but even under 18 में आप can like you can see new faces like coming from Rajasthan, Uttarakhand, and Okay. even for the Indian camp अंडमान निकोबार आइलैंड से बच्चे उधर शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं. तो देयर इज अ ह्यूज डेवलपमेंट वी कैन सी. Fantastic. Andaman Nicobar सुन के I'm very happy because that island group is pretty ignored in Indian sports. ये या सोचते नहीं उनके बारे में. So it's fantastic to see so many diverse regions coming into rugby. Ma'am, you talked about Rugby India, like, and since you have come through the grassroots, so if somebody has to take up rugby in India, like she's 14, let's see she's 14 or he's 14, what is the uh, what is the structure he should follow? Like कहाँ पे कैसे करके rugby clubs मिलेंगे, कहाँ पे leagues होती हैं, city leagues, state leagues. What is the national structure and how can a junior player go about pursuing the sport professionally? so basically if you want to join this rugby game, you must have a sign for the club. You must join the club first. Then club will actually provide all the opportunities to you. So after joining the club, you can able to represent the district levels. After that, you will be shortlisted for state camps, and if you are doing well in the state tournaments, then the national coaches, which is are Vesely, Servi, and Kiano, they will come along to you and they will ask you your name and your contact details that you are shortlisted for the upcoming camp, and that's how you can actually join this game as professionally. सो क्लब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर आपको रग्बी खेलना है, क्योंकि फुटबॉल में भी आपके पहले Yes. क्लब्स ज्वाइन करने होते हैं. तो सेम विद रग्बी, क्लब्स आपको सब कुछ बेसिक वगैरह जितनी आपकी ट्रेनिंग है, बेसिक्स रग्बी के सब सिखाते हैं. फिर वहां से आपके जहाँ पे आप रहते हैं तो वो आप किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं,
तब आपकी वहां से एक टीम बनती है, तब आप डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलते हैं, देन स्टेट, देन नेशनल. Okay, so structure है खेलने के लिए. या Fantastic. Because structure is very important because India में I've seen, especially in football, structure काफी काफी चीज में है ही नहीं. Like don't know how जी. to uh, pursue the game. So it's very important to have a structure. So, ma'am, Rahul Bose, Rugby India's boss, he said, I think in March that Rugby India will get a national league, like men's league and women's league. And Hockey India recently have started a league, auction हुआ वगैरह, football में भी league या है. So how important is a national league for rugby in India? Like what will be the importance and what will be the role the league will play? the thing, if you want to grow the game, you should start from the grassroots level, right? And इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, वो ज्यादातर क्रिकेट और फुटबॉल की तरफ जा रहा है. इवन यू कैन सी बैडमिंटन में भी अभी काफी ज्यादा, क्योंकि लीग स्टार्ट हुए हैं, टेबल टेनिस के लीग स्टार्ट हुए हैं, कबड्डी के, तो गेम एकदम ग्रो हुआ है. तो सो दैट हमें भी वही लीग मतलब स्टार्ट हम करना चाहते हैं, सो दैट कि सब कनेक्ट कर पाए कि रग्बी है क्या. अभी तो ये कि स्टेट टूर्नामेंट खेल रहे हैं और इंडिया टीम खेल रही है, बट और जो प्लेयर्स हैं जो नहीं खेल पाते नेशनल टीम के लिए, बट दे आर स्टिल गुड, they can play the leagues, they can also get the exposure with the experienced players. So that is something really important for all of us in state, in terms of growing the game on the national level as well, because वहां से और जो बच्चे हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो और स्काउट टीम शॉर्ट लिस्ट करेगी. मे बी कुछ लोग होते हैं जो 19-20 के डिफरेंस से रह जाते हैं नेशनल टीम के Mhm. लिए, बट ये लीग्स उनको एक्सपोजर देंगी कि कि अगर मुझे 5 साल हो गए खेलते हुए, बट साइड वाले को, जो मेरे द पर्सन हु इज प्लेइंग नेक्स्ट टू मी, वो एक्सपीरियंस यंग एज पे पा सकता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. Absolutely healthy competition. Like as you said, like अगर national captain नहीं हो, that does not mean you're a bad player. Just या missed it. So national competition is very important to keep players in check. That team बिकॉज में fight रहना चाहिए. yeah, a player is not every player, like every player is a good player. It's all about the opportunity they are getting. The more opportunity they are getting, the more they can improve themselves. That's it. Fantastic, fantastic, ma'am. Talking about grassroots, age fraud and fake documents being used to bypass age cutoffs is a big issue in Indian sports. I'm not sure what the scene in rugby is. So, do you think age fraud in rugby grassroots in India is also a thing? Like, is there a presence of No, like such I don't cases? think No. so. No, no. Rugby is a sport. You can't play with the senior women or senior men if you're 18 years old. This is not athletics that you just Okay. have to run for the 100 meter. You must tackle the player who is in front of you. Okay. So I don't think so, and I have not seen anybody who is basically age fraud किसी ने किया है. Fantastic. That's good news because hockey sports is a huge issue. So Yeah. I don't know what the rugby situation is. Ma'am, you like in Indian team we have senior players like Wabis, we have Sheetal Sharma, and they're like they're like they have been in the scene for a while, but still you got the captaincy ban. So like what was your reaction and what was the entire experience leading Team India at such a fast-paced game and that too early in your career as well? So, if you talk about leadership, as you just said the name of Vabis Barucha and Sheetal Sharma, they both are my best friends. और लीडरशिप, तो जो मेरे ये दो दोस्त हैं, वो पहले से ही लीडर इतने अच्छे हैं. तो Mhm. एक होता है कि आपका जो एनवायरनमेंट होता है, तो आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आप अडेप्ट कर लेते हो क्योंकि वो आपका एनवायरनमेंट ऐसा है. तो लीडरशिप, इट्स नॉट अ लाइक बिग वर्ड फॉर मी, और मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं था, बिकॉज मुझे पता था कि कहीं ना कहीं लाइक बॉबी बरूचा को हम बॉबी भाई बुलाते हैं, तो Okay. बॉबी को बॉय भाई थे जो, तो हमें पता था वो इस कैम्प में नहीं है. और शीतल जस्ट अभी वो इंजरी से कम बैक कर रही है, दैट्स अ ह्यूज माइलस्टोन. तो वो उसको उतना प्रेशर
मेरी तरफ से ये था कि जस्ट प्ले योर गेम, जस्ट गिव योर 100%। और लीडिंग की बात आती है तो थर्ड इज लीडिंग, मुझे मेरा ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं था पर्सनली। एंड द एक्सपीरियंस, इफ यू टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, बिकॉज आई हैव chosen by the legend, so maybe उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा, but still experience was really good. Fantastic. So, ma'am, talking about captaincy in rugby, like in cricket, captains play a big role in the sport when the matches are happening. But in football, coaches take the main decisions, and they administer the game. Yeah. So, how does rugby work? Like, do captains in the field have an active role to change tactics, change teams, and change formations, or do coaches are the supreme character in the field as well when the games are happening? How does it work? So in rugby, like on on field और ऑन फील्ड ज्यादा रोल कोच का ही होता है। वो कौन कब क्या खेलेगा, जो फर्स्ट सेवन है वो चूज किए जाते हैं कोचेस के अलावा। इसमें कैप्टन का कोई रोल नहीं होता। कैप्टन इज ऑल अबाउट टू मेक द एनवायरमेंट लाइट, टू जस्ट लीड बाय एग्जांपल, टू सेट द माइलस्टोन फॉर द टीम, एंड दैट्स समथिंग फ्रॉम माय साइड। I mean, you are a forward in the national team, and you have been a forward for a while. So, what different attributes does a forward in a rugby team require than other positions? Like, what makes a coach pick you as a forward, and as a player, how do you decide that I want to be a forward in the team? So, how does it work? So for forward, you need strength. That's a big thing. So if you are strong, you can be a forward, but still you must have that explosiveness. If you want to take hit, like if I'm taking hit between the two players, it must be like explosion कि हाँ दो लोग में मुझे नहीं पकड़ पाए, तो वो चीज होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स फॉरवर्ड्स में भी अलग अलग पोजीशंस होता है। तो मैं हुकर हूँ। हुकर का मेनली काम होता है जब भी लाइन आउट वगैरह होता है तो जंप के लिए, तो मुझे अपना जंपिंग एबिलिटी भी अच्छा करना पड़ता है उस पोजीशन के लिए। एंड ऑफ कोर्स जब भी आपको टीम में वो एक शॉर्ट बर्स्ट चाहिए, वो फॉरवर्ड प्रोवाइड करता है। और हैंड्स जो होते हैं, स्किल्स, वो मेनली बैक्स का काम होता है। तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि टैकल हार्ड एंड स्टील द बॉल, और ऑफ द बॉल ज्यादा काम होता है फॉरवर्ड्स का, इवन टेकिंग हिट, और मतलब Hmm. स्पेस देखना कि कहाँ पे स्पेस है, यहाँ मैं Mhm. जा सकती हूँ Mhm. अंदर कि नहीं, तो वो ज्यादा फॉरवर्ड का काम होता है। Fantastic, fantastic tactical answer because I was hoping for something exactly like this. So, ma'am, you are a Indian athlete, and India में sports is not a very popular career option yet. Cricket is there, football is kind of there. Baki sports are growing slowly in national scene. So, ma'am, what has been the challenges in your career, both injury wise, finances, like support from parents, friends, federation? So tell me about the rough side of picking up a sport in India, especially rugby. So if you talk about sport, you never know when you're gonna injure yourself. That is not in your control. That is uncontrollable, right? And rugby is a contact sport. You never know कब आप injured हो जाओ। Even like जो drill आप रोज कर रहे हो, अब वो आपका एक बैड डे होगा कि कब आपका नी ट्विस्ट हो जाए या एंकल ट्विस्ट हो जाए। So same thing happened with me in 2020 after lockdown. I went to the practice. So उसमें hand off करते हैं, Mhm. fend off करते हैं बेसिकली जो आपके सामने प्लेयर है उसको। So we were playing against boys. They were around 14 and 15 of age, right? So वो सामने आया लड़का और मैंने उसको ऐसे हैंड ऑफ किया। तो उसके बाद मेरा ये जो जॉइंट है, बेसिकली ये वाला जॉइंट है जो, ये अभी भी फिंगर मेरी मुड़ती नहीं अच्छे से। जो मेटाकार्पल था वो डिसलोकेट हो गया था। Okay. और उससे पहले शिन में हेयर लाइन फ्रैक्चर आया था। इवन आई गॉट स्टिचेस सो मेनी टाइम्स, अबाउट 3 times स्टिचेस, 5 आईब्रो पे। सो इफ यू टॉक अबाउट the support we are getting from federation is there, the support which we need when we are on our bad days, like through our friends or through our teammates, and from your families, so वो सब मिल रहा है। और financially I am quite settled, so
जो मेन आपका होता है कि फेडरेशन आपका साथ दे जब आप इंजर्ड हो, जो आपके Mhm. टीममेट्स है वो आप पे चेक कर रहे हैं कि Yes. आर यू डूइंग गुड और नॉट, यू कैन कम बैक। एक मेंटली जो आपको सपोर्ट चाहिए होता है वो भी वहाँ पे है। और अगर आप बात करो कि इंजरीज होते हैं तो इंजरीज होते हैं, you have It's no part of control the game. Yeah. in that. Yeah, it's a part of a game. So everything is there. Just hope everything goes well for everybody. Yes. Yes. Absolutely, ma'am. So you have been in the rugby scene for a while. So, like, what are your short-term and long-term targets as a player? For personal targets, what are your personal targets? What are your targets as a national team player as well? What do you see India doing in the rugby scene on an Asian level or world level in the next 5 to 10 years? So, what are your national and personal targets for the next few years? So my personal targets are to play for international clubs, Okay. like Yeah. to play for Japan's clubs, to play for France club. Even if I get an opportunity, I would love to play for them. And if you talk about my team goal, my national team's goals are like short term is like एशियन सेवेंस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर हमें गोल्ड जीतना है, क्योंकि सेकंड ये फोर्थ टाइम था जब हमने सिल्वर मेडल हम लोग जीते। और शॉर्ट टर्म में यही है कि गोल्ड मेडल लाना है, नो मैटर व्हाट। सो दिस इज Yes. द शॉर्ट टर्म गोल। एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में यही है कि एशियन गेम्स, Yes. यू कैन एक्चुअली से कि शॉर्ट भी नहीं है, मीडियम मीडियम Medium term हाँ। goal. हाँ, मीडियम टर्म गोल्स कि जो एशियन गेम्स हैं हमें उसमें जाना है, एंड टॉप 5 में, एटलीस्ट टॉप 5 में हमें अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना है, और 5th प्लेस पे हमें आना ही है। और लॉन्ग टर्म देयर इज अ ह्यूज प्रोसेस कि एशियन गेम्स में अच्छा करेंगे और एशियन ट्रॉफी में गोल्ड आएगा तो हम एशियन गेम्स में जा सकते हैं इजीली। फिर उसके बाद हम डिवीजन 1 में खेल सकते हैं, जहाँ पे टॉप लेवल की टीम्स होते हैं, जापान, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, Yes. Yes. सिंगापुर। सो वहाँ पे हमें बने रहना है, अब हमें डिवीजन 2 में नहीं आना। कि अगर हमने इस नेक्स्ट ईयर हमने गोल्ड मेडल लिया तो वी डोंट वांट टू लुक बैक, Right, हमें exactly. बस Just maintain the level. या मेंटेन द लेवल। सो दैट्स द लॉन्ग टर्म गोल। एंड इवन अगर हम एशिया में टॉप 1 टीम रहेंगे तो हम ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर पाएंगे। सो दीज आर द लॉन्ग टर्म गोल्स। Fantastic, fantastic. Fingers crossed. And one last question for you. Since you're a national team player, and so tell me, how does the entire calendar year of national team player works? Like, we have the India team matches, you're in Indian national team camps. So what about rest of the year? Like, how does a rugby player maintain their fitness, their agility, and their game control over the year when there are no camps or games? So how does an entire year work? Like since it's January, मान लेते हैं अभी जनवरी में है, या so how does the entire year will be planned for a rugby national team player like me? सो बेसिकली पहले अभी तो हमारा कैलेंडर खत्म हो चुका है। सो इन केस हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो स्टार्ट होता है जुलाई से मेनली, वो हमारे नेशनल सेवन्स टूर्नामेंट होते हैं जिसमें हम सारे एथलीट्स को खेलना पड़ता है जो भी पार्ट है नेशनल टीम के। तो उससे उस अकॉर्डिंग हमारे जो एसएनसी कोच हैं, कियानो, ही इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो वो उस अकॉर्डिंग हमें प्लान भेजते हैं। तो हमें जो प्लान भेजा जाता है वो हमारा पर्सनल नहीं होता है, वो हमारे जो एसएनसी कोच होते हैं हम उनके अकॉर्डिंग ही करते हैं। इवन द न्यूट्रिशनिस्ट वो हमें देते हैं कि ऑफ सीजन में आपको कैसे क्या करना है और इन सीजन में आपको कैसे क्या ट्रेन करना है। सो so it's all depend our coaches, so we blindly follows them, and which कि जो हमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। Fantastic, fantastic. So, ma'am, I think that's all I wanted to know. Fantastic talking to you about rugby India's professionalism, grassroots, your journey, and how the rugby game works. Because rugby के बारे में बहुत कम knowledge है लोगों में. ठीक है? So it's very important to watch the game. So I hope people keep watching international rugby and also Indian rugby. Both are important to follow what's happening in the world and also in India. So, ma'am, all the best for your future games and have a fantastic post-season recovery. And I hope you do well. I hope we qualify for the Asian Games as well in the next edition. ठीक है? So, thank you, ma'am, for coming to this interview. Field Vision thanks you and all the best for future interviews. So, thank you, ma'am. Thank you so much for having me।